Yeah, in unit number 1 we have the points like this. ये सारे points unit number 1 के अंदर थे. We just started with the first understanding why we need to study OB. तो अगर हम बिहेवियर को समझना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझना चाहते हैं, सो दैट कि भाई हम लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, लोगों का सेटिस्फेक्शन बढ़ा सके, टर्नओवर कम कर सके, एब्सेंटिज्म कम कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप की फीलिंग्स लोगों के अंदर क्रिएट कर सके, सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड एंड इवन मैनेजर्स कैन चेंज देमसेल्व्स. देन वी जस्ट डिस्कस कि भाई वर्क प्लेस है तो वहाँ पे एक मैनेजर होता है जो लोगों से काम लेता है, तो हमें उसको समझना पड़ेगा. तो वो कहाँ पे काम करता है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर. कंपनी क्या है, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ people who are coming together, working together on a continuous basis for a common goal. तो वो सबको उनको संभालना है, तो इसीलिए मैनेजर वहाँ पे काम कर रहा है. मैनेजर का मैनेजरियल फंक्शंस क्या है, तो क्या पीओडीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. उसके बाद हमने देखा था कि बीइंग अ मैनेजर ही आल्सो नीड टू प्ले द वेरियस काइंड्स ऑफ रोल लाइक द इंटरपर्सनल रोल्स, informational roles and decisional role. Then we just see that being a manager he need to possess these kinds of skills कि ये skills उसके अंदर होनी चाहिए like a technical, human and conceptual. फिर ये एक स्टडी था कि जिसके अंदर हमने देखा कि बीइंग अ मैनेजर्स वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता है एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन एबल टू सी कि भाई वो सक्सेसफुल है या इफेक्टिव है. आपकी माइक स्विच ऑफ कर दीजिए नाउ. उसके बाद डेफिनेशन से पहले हमने देखा था कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज बिहेवियर. तो उसके अंदर हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वंस अगेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर फॉर द कॉमन गोल. इट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. बिहेवियर मींस हाउ यू एक्ट और रिएक्ट इन अ गिवन सिचुएशंस. Based on that, we just see the definitions of OB, where we just see that organizational behavior is a field of study that investigates the impact that individuals, group, and structures have on the behavior within the organizations for the purpose of applying such knowledge towards the improving the organization's effectiveness. Then this is the second definitions. Then we discuss important one, that is the scope of organizational behavior, where we just see that there are the three main components which is going to determine the OB, that is individual behavior, group behavior, and organizational structure and its impact on a behavior. Then we just see the various disciplines which contributes in the field of OB, where we just see that the disciplines like psychology, sociology, social psychology, anthropology, and political science. These are the disciplines which contributes various concepts under the subject of organizational behavior. Then these are the points we discuss under the title of organizational behavior. Importance of organizational behavior. Then these are the points under the title of nature of organizational behavior. Then next point is organizational behavior framework. So in order to understand organizational behavior, you need to see what are the areas are there. So we have three main components which we already discussed in a scope, but here head-on is environment in which you are working. Here, so competitive environment, social, technological, political. So these are the environmental factors which will affect the organizations as a whole. Then lastly, we just discussing about the OB models. So there are the various models under the organizational behavior for the purpose of understanding the behavior of people कि workplace पे लोग ऐसा behave क्यों करते हैं, वो समझने के लिए various models हमारे यहाँ पे है. तो in that model is this is 3 layers model. This is the basic model of organizational behavior. In order to understand the behavior in terms of output, we need to understand individual, group, and structure. Then as per the syllabus, we have the model is SOBC model. So SOBC model is quite complex as compared to SOR, and it's an advanced version of SOR. SOR is a stimulus, organism, and response model, where in one situations, how you respond based on your physiological organism. SOBC stands for situations, organism, behavior, and consequences. So here you need to explain what SOBC stands for and how it works with the help of one example. So this is unit number 1. Thank you all of you.